हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो टुडे वी स्टडी अबाउट दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। किसके बारे में स्टडी करेंगे? अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में? हियर दे आर ओवरी। A pair of ovary is present in female reproductive system, and that pair or that ovary is known as primary sex organs. The second thing, इसके बारे में स्टडी करेंगे अबाउट यूट्रस। थर्ड, we discuss about fallopian tube. After that, there is another structure, vagina, and after that we study about glands. ठीक है, different glands. So let's take the first part which in the female reproductive system, that is primary sex organs or ovary. Ovary, these are very important structures. Ovary क्या करते हैं? ये ovary का function क्या है? These actually produce the female gametes and female sex hormones. ठीक है, क्या करते हैं? फीमेल गैमेट्स बनाते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन्स। These ovaries are about 3 to 4 centimeter in size. ठीक है, a pair of ovaries present about 3 to 4 centimeter in size. Their function is to produce female gametes and female sex hormones. This ovary, it is small, almond shape and are present in pelvic region. ठीक है, these ovaries are present in pelvic region. Actually they are present in abdominal cavity. जब मैंने आपको टेस्टिस के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था that they are located or they are present in extra abdominal cavity. Reason क्या था? They require a temperature lower than that of the body temperature. But here these ovaries are present in the abdominal cavity. यहाँ पे कोई टेम्परेचर का केस नहीं है, तो इसलिए ये abdominal cavity में present है. ठीक, these ovaries are important. They produce, ये क्या कहते हैं? Actually produce the egg. ठीक है, क्या करेंगे? ये एग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. मैंने आपको बताया ना फीमेल गैमेट्स. सो एग और ओवम इज द फीमेल गैमेट. तो जब ये एग बनाते हैं, तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कुछ इस तरह से होता है. लेट अस कंसीडर वन ओवरी एंड अनदर ओवरी. बताया ना, अ पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन. ठीक है, क्या होता है? ये ओवरी जो है, दीज आर सस्पेंडेड. किसके हेल्प से? दीज आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ सम थिकनिंग म्यूकस लाइनिंग बोल सकते हो आप, म्यूकस फोल्ड्स बोल सकते हो, मिसेंट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीजो ओवेरियम. ठीक है, दीज आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ मीजो ओवेरियम. These ovaries are suspended with the help of some thickening mucus folds, which are known as mesoovarium. Another mesentery or another lining is present, or we can say that another ligament is present, which is known as ovarian ligament. जिसको मैं ड्रॉ करूंगी थोड़ी देर में. So क्या होता है? यहाँ पे ओवरीज के पास, ये तो आगे mesoovarium, यहाँ पे क्या होता है? A funnel-like structure is present. ठीक है, and this funnel-like structure consists of some finger-like projections. This funnel-like structure is called as infundibulus. Infundibulus.
bullous. ठीक है, and these finger like projections, these are called as fimbriae. जो भी विजिबल नहीं होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. These finger like projections are called as fimbriae, and this funnel shape, this funnel like structure, this swelling part, this funnel shape is known as infundibulus, and they then form or they then undergo a loop structure. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, a folding or a loop structure is formed which is known as isthmus. Okay, this structure, this folding or this narrow tube like structure is known as isthmus, and this swollen part is called as ampulla. This swollen part is called as ampulla, and together these ampulla and isthmus together what they form a structure or a tube like structure which is known as fallopian tube. ठीक है, क्या बनाते हैं ये, fallopian tube. अच्छा, this whole fallopian tube then opens into a structure which is known as uterus. क्या करेंगे, यूट्रस की फॉर्मेशन करेंगे. Same structure. Here also a pair of ovaries, an ovary is present, and like this. ठीक है. So this uterus is inverted pear in shape. कैसा होता है ये, inverted pear in shape. अच्छा, अब समझने की बात, अब ध्यान से समझिएगा कैसा होता है. मान लीजिए this is funnel like structure infundibulus, and this is ovary. Now these finger like projections, these are what, these are fimbriae. ठीक है, तो ये fimbriae क्या करते हैं, these show little movement and create a suction. ठीक है, जब ये suction है, आप बोल सकते हो प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो उस फोर्स से या उस प्रेशर से क्या करते हैं, ये ओवरी में से जो एग रिलीज होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, and through these fimbriae it enters into infundibulum. फिम्ब्रे के अंदर क्या होता है, फिम्ब्रे के अंदर यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ओस्टियम. क्या बोलते हैं उनको, तो मैं यहाँ पे लेबल करती हूँ, हियर स्मॉल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज ऑस्टियम और ओस्टियम. ठीक है, तो जब यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से वो इन्फंडिबुलम में से पास करके थ्रू फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में आ जाएगा. Now this ampulla region, ये जो ampulla region है, this ampulla region is very important. Here the fertilization takes place. So it is a site for fertilization. And after fertilization, the egg और sperm जब फ्यूज कर जाते हैं, तो fertilization के बाद क्या होगा, जो zygote बना होगा वो यहाँ पे आके यूट्रस में आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. सो यूट्रस इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन. Now this part of the uterus is known as funding part. Funding part. This is body part, and the third region is cervix. ठीक है, funding part, body part and cervix. नो, मैंने आपको बताया कि दो टाइप के लिगामेंट्स होते हैं, एक तो आगे ये मीजोवेरियम, एंड हियर द सेकंड टाइप ऑफ लिगामेंट्स आर प्रेजेंट व्हिच कनेक्ट द ओवरी विद द यूट्रस, एंड दीज आर नोन एज व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट्स. ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट्स. ठीक है, these two ligaments help to suspend the ovary in this region.
ठीक है, ये क्या आ गया, दिस इज यूट्रस पार्ट। नो, यूट्रस पार्ट में 3 मेन लाइनिंग्स होती है। कितनी होती है? 3 लाइनिंग होती है। द आउटर लाइनिंग इज नोन एज पेरीमेट्रियम, दिस इज नोन एज पेरीमेट्रियम। मिडल लाइनिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट लाइनिंग, एंड दिस इज नोन एज मायोमेट्रियम, हाईली मस्कुलर। ठीक है, मायोमेट्रियम इज हाईली मस्कुलर. Now after that the innermost lining is little folded and highly vascular. This is little folded and highly vascular. And this lining is called as endometrium. Endometrium. ठीक है, this is endometrium, myometrium and perimetrium. Endometrium is very vascular and folded in structure. Myometrium is very highly muscular and the perimetrium is the outermost layer. Now this cervix part, here 2 membranes are present. ठीक है, क्या होगा, very thin membranes are present. This inner one is known as inner OS or internal OS. OS is what? OS is an abbreviation. क्या होता है OS? एक abbreviation है किसके लिए? Orifice. Orifice आप समझ सकते हो. Orifice is a cavity. क्या बोल सकते हैं आप? Cavity को बोला जाता है, मतलब ये small opening है which opens into a body cavity. So orifice is what? It is an opening which opens into a body cavity. ठीक है? And the second one is external orifice. External orifice. This cervix part then opens into another part which is called as vagina. क्या बोलते हैं इसको? Vagina. Here thin membranous structure is present which is known as hymen. ठीक है, वजाइना में थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइमन. वजाइना ओपन्स टू आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ ओपन करेगा विद द हेल्प ऑफ वजाइनल ओपनिंग. ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, वजाइनल ओपनिंग होगी, या फिर आप बोल सकते हो उस वजाइनल ओपनिंग को हम क्या बोल देते हैं, दैट वजाइनल ओपनिंग आउटसाइड, वजाइना ओपन्स टू आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ वजाइनल ओपनिंग और वल्वा. किससे होता है, वल्वा से. ओके, इसके बारे में मैं आपको जब एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ाऊंगी वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो दिस इज वेजाइना. नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो नेक्स्ट हम अभी क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट दिस ओवरी. हम नेक्स्ट अभी स्टडी करने वाले हैं टीएस ऑफ द ओवरी. ओके, ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, मैंने अभी तक आपको पूरा सिस्टम पढ़ा दिया, तो अभी हम स्टडी करेंगे अबाउट द ओवरी, टीएस ऑफ द ओवरी, या फिर आप बोल सकते हो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी. क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है. सो दिस स्ट्रक्चर structure is known as ovary. ठीक है, क्या है ये, एक ovary. The outermost layer is tunica albuginea. ठीक है, क्या है, tunica albuginea. This ovary is divided into 2 regions. क्या होते हैं यहाँ पे, ovary को डिवाइड किया गया है 2 regions में. This outermost region is known as cortex region. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, cortex, and is made up of reticular connective tissue.
and this is medulla. होता क्या है, here a primary cells are present. ठीक है, क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है. जब प्राइमरी सेल्स यहाँ पे बनते हैं तो क्या होता है, इसके बाद वन ऑफ द प्राइमरी, काफी सारे, ये सारे जो है इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स. ठीक है, इनमें से क्या होगा, सिर्फ एक प्राइमरी सेल, दैट वन प्राइमरी सेल अंडरगोज मैच्योरेशन. ठीक है, क्या होगा, वन प्राइमरी सेल अंडरगोज मैच्योरेशन एंड इंक्रीज इन साइज whereas the other remains as such. ठीक है, बाकी वाले क्या होंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे. ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब दिन दिन में क्या होता है कि इनकी ग्रोथ होती जाती है. ठीक है, सो दिस प्राइमरी फॉलिकल नाउ स्टार्ट्स टू कलेक्ट मास. मास किसका होगा, मास ऑफ सेल. ठीक है, इट नाउ स्टार्ट्स टू कलेक्ट द मास ऑफ सेल्स नियर इट. This is primary cells or primary follicle. ठीक है, these primary follicle or primary cell undergo the maturation and collect क्या करता है, यहाँ पे अपने पास एक mass of cells को इकट्ठा कर देता है. Now after this the formation of, क्या होगा यहाँ पे, formation of graphene follicle takes place. कैसा होता है graphene follicle, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, it collects the cells near it. ग्रेफिन फॉलिकल के केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे कैविटी दिखाई देती है. क्या दिखाई देगा, कैविटी इनसाइड दिस फॉलिकल. Is known as antrum. What is this? This is graphene follicle, named after the scientist Graphene. Okay, okay, this is graphene follicle. After this after the formation of graphene follicle, क्या होगा, ये जो अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte. ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल बनने के बाद क्या होता है, एग रिलीज कर जाता है. देखो बच्चों, हम बोलते हैं कि एग रिलीज करता है. Actually, it is not the egg which released. It is this secondary oocyte which released. ठीक है, क्या होता है, this secondary oocyte released from this whole structure which is known as graphene follicle. होता कैसा स्ट्रक्चर है, मान लो this is secondary oocyte consisting of layers near it. ठीक है, इसके पास क्या होती हैं, layers of cells present. बाहर क्या होगा, मैंने आपको बताया, बाहर कैविटी प्रेजेंट होती है, दिस कैविटी, एंड दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम. ठीक है, क्या होगा, कैविटी प्रेजेंट होती है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम. एंड मैंने यहाँ पे फ्लूडी सा स्ट्रक्चर बनाया, एंड दिस फ्लूड, ये एंट्रम जो होता है यहाँ पे फ्लूड फिल्ड होती है, ये कैविटी जो है यहाँ पे फ्लूडी, मतलब यहाँ पे फ्लूड प्रेजेंट होता है. एंड दिस फ्लूड इज नोन एज ल्यूकर फॉलिकल. ओके, दिस फ्लूड इज नोन एज ल्यूकर फॉलिकल. ओके, एंड द कैविटी इज नोन एज एंट्रम. आउटसाइड दिस कैविटी मास ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट. क्या होगा, मास ऑफ सेल प्रेजेंट. This mass of cell is known as membrana granulosa. क्या बोलते हैं इसे हम, membrana granulosa.
membrana granulosa. Okay, this membrana granulosa is divided into two regions, या फिर आप बोल सकते हो into two layers, outer layer and the inner layer. The outer layer is known as theca externa and the inner one is known as theca interna. ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा क्या है, दो लेयर्स में डिवाइड है. ठीक है, the outer one is known as theca externa and the inner one is known as theca interna. Now this is the structure of this graphene follicle. Secondary oocyte which consists of some cells or mass of cells. ठीक है, outside this secondary oocyte a cavity is present which is known as antrum. This cavity is filled with a fluid which is known as liquid folliculi and this antrum के बाहर क्या होगा, layers present होती हैं. A thick layer of cells is present which is known as membrana granulosa. This membrana granulosa आगे दो टाइप की है, theca interna and theca externa. So this is the structure of graphene follicle. This layer is known as discus proligerus. ठीक है, अच्छा. Now this secondary oocyte is not suspended as aerial. ठीक है, क्या होता है कि ये जो secondary oocyte है ये ऐसे हवा में या फिर ऐसे खुले में नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, कैविटी के अंदर फ्लूइड में it is suspended to some cell mass. यहाँ पे क्या होगा, cell mass present होता है and this cell mass is known as cumulus oophorus. ठीक है, किसके साथ सस्पेंड हुआ होता है, किसके साथ, ये जो क्या है सेकेंडरी oocyte है ये सस्पेंड किससे हुआ होता है, थ्रू मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से. किससे होगा, थ्रू क्यूमुलस oophorus और sometimes it is also known as germ hill. So this is the structure of graphene follicle. After the formation of graphene follicle, here ovulation occurs. क्या होगा यहाँ पे, ovulation occur होगी. यहाँ पे लिखती हूँ मैं ovulation and this secondary oocyte expels or this secondary oocyte bursts out of this graphene follicle. ठीक है, graphene follicle से ये बाहर आ जाएगा secondary oocyte. और यहाँ पे क्या आ जाती है, जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है वो एज सच रहेगी. जब ये बर्स्ट करता है, बर्स्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी रप्चर करती हैं जिससे ब्लड जो है वो निकलता है. बट जैसे ही ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी, जैसे ये सेकेंडरी oocyte निकलता है तो उसके बाद ही क्या होना शुरू हो जाता है, क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है. सो आफ्टर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस हेमोरेजिकम. ठीक है, after the formation of hemorrhagicum, corpus hemorrhagicum, there forms another structure which is known as corpus luteum. क्या बनता है, corpus luteum. Very important structure as acts as temporary endocrine gland. किसकी तरह एक्ट करता है, टेम्पोरेरी endocrine gland. It produces a hormone which is called as progesterone. ठीक है, what is this? This is corpus luteum formed after corpus hemorrhagicum. It acts as temporary endocrine gland and produces progesterone. ठीक है, now after the formation of corpus luteum, another structure is formed which is known as corpus albicum. If the structure, अगर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हैपन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगी जब ओवुलेशन हो जाएगा एंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, देन क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये परसिस्ट करेगा. बट इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी देन कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, देन अनदर स्ट्रक्चर बनाएगा जो काफी डीजनरेट हुआ होता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकम.
So this is all about the TS of the ovaries. Here blood vessels are also present. ठीक है, यहाँ पे blood vessels भी present throughout this structure. Blood vessels भी present होती है. So this is the structure of the ovary or TS of the ovary, and this is the structure of this graphene follicle. Now next हम क्या study करेंगे? Next we study about, हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बोला था लास्ट पार्ट क्या पढ़ा था उसमें हमने वजाइना. ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था वजाइना. तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है? दैट स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज that vagina part act as a birth canal, and that is the only site where the deposition of the sperms takes place. ठीक है, अच्छा, तो लास्ट पार्ट याद कीजिएगा, मैंने आपको लास्ट सर्विक्स के बाद बताया था that there present another structure which is known as vagina. Now that vagina opens outside with the help of vaginal opening which I told you earlier. vaginal opening से open होगा outside and और अनदर वेजाइनल ओपनिंग को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? वल्वा. ठीक है, सो होता है, तो नीचे ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वल्वा. इट हैज टू ओपनिंग्स. ठीक है, क्या होती है यहाँ पे? दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. दिस ओपनिंग इज नोन एज यूरिथ्रल ओपनिंग. यूरिथ्रल ओपनिंग opens into the urethra, and this opening is known as vaginal opening. Opens into the vagina. Here in this vaginal opening, as I told you, a layer is present, a thick layer is present, which is thin layer is present, which is hymen. ठीक है, now क्या होता है? This vulva region or the vulva region is what? It is a depression which opens into the uterus part. ठीक है, through cervix region. Okay. Now this vulva region is known as vestibule. This is known as vestibule. इसके बाहर, vulva के बाहर क्या होता है? दो layers present होती है. ठीक है, like this. क्या होगा? दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. दिस इनर लेयर इज नोन एज, दिस इज द इनर लेयर एंड इट इज नोन एज लेबिया माइनोरा. ठीक है, लेबिया माइनोरा के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे थिन लूज स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज प्रीप्यूस. द फंक्शन ऑफ दिस प्रीप्यूस इज व्हाट? देखो क्या फंक्शन होता है इसका. यहाँ पे इस रीजन में क्या प्रेजेंट होती है? स्मॉल थिक मस्कुलर रीजन इज प्रेजेंट. ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे थिक मस्कुलर रीजन प्रेजेंट होता है. इसे हम क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस. दिस क्लिटोरिस इज होमोलोगस, या फिर आप बोल सकते हो दिस क्लिटोरिस इज सेम एज दैट ऑफ द this clitoris is same as that of the penis in the male reproductive system. ठीक है, now this is prepuce which actually protects for clitoris. ठीक है, इसके बाद the outermost layer is known as labia majora. क्या होता है? labia majora. अच्छा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? here gland is present. A pair of gland is present which is known as bulbovestibular gland. Bulbovestibular gland. This gland is homologous. जैसे मैंने आपको बताया that this clitoris is homologous to penis in male reproductive system, and herein this bulbovestibular gland is same or is homologous to that of the Cooper's gland which I told you, which I taught you in male reproductive system. Same क्यों है? homologous क्यों है? Because these both produce what? They produce mucus for lubrication. ठीक है, क्या करते हैं? ये mucus release करते हैं for lubrication. Here यहाँ पे क्या होता है? muscular region is present which is known as mons pubis. Here
और द एक्सटर्नल व्यू ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल जेनिटलिया. ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया. व्हाट आई टोल्ड यू हियर दैट टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, यूरिथ्रल ओपनिंग एंड vaginal opening. Now a pair of gland is present which is known as bulbovestibular gland. What it releases? It releases mucus which helps in lubrication. Two linings are present. The one is labia minora and the other is labia majora. ठीक है. Now here this loose skin structure is, loose skin folding is present which is known as prepuce. The function of this prepuce is to protect or is to provide protection to the clitoris which is same as that of that, किसकी तरह सेम है, this is same as that of the permissive male reproductive system. Okay, so this is all about the external genitalia. Now here I told you about one gland that in female reproductive system this bulbovestibular gland is present. Another gland which are present in female reproductive system is mammary gland. Okay, so one gland is bulbovestibular gland. Releases mucus. Okay, releases mucus which helps in lubrication. Another glands which are present in female reproductive system are mammary glands or breast. Okay, mammary gland or breast. क्या होता है, these glands, these are secular tubular structure which are present in thoracic region. कहाँ पे present होता है, thoracic region. Their function is to produce milk to feed the newborn baby to provide the nutrition. ठीक है, क्या function होता है, they produce these, from these glands milk production takes place which act as, which जिसके आप क्या बोल सकते हैं, which is a food for the newborn baby to provide them the nutrition. ठीक है, these mammary glands, these are what these consists of lactiferous glands. That lactiferous glands are like this. These lactiferous glands then open into, these lactiferous glands are secular and they are open into a region which is known as areola. ठीक है, किसमें open करेंगे, these open into a region which is known as areola and then they open into the next part which is known as nipple. Okay, so these openings, through these openings, here swollen part, in this areola swollen sac-like structures are present. The function of this swollen sac-like structure is what, their main function is to store the milk. मतलब क्या कहते हैं, their main function is for the temporary storage of milk. Near this lactiferous sacs or lactiferous region, fats are, this tissue is made up of fats. ठीक है, fatty tissue. This is areolar part, this is nipple part and this is the sac-like structure. Now the function is to produce milk when the newborn baby is after the newborn baby takes birth. ठीक है, these mammary glands form puberty stage. कब formation कब होगी इनकी, puberty stage, due to the release of sex hormones. And after that, इसके बाद ये फिर से ग्रो करते हैं कब, जब प्रेगनेंसी हो जाती है. ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी, due to same the release of these hormones.
So these are the two glands which are present in female reproductive system. One is bulbovestibular gland and the other is mammary gland. So this is all about the female reproductive system. We studied about primary sex organs, then we studied about fallopian tubes. I told you that the fallopian tubes then open into primary sex organs क्या थे? Ovary. Near these ovary, fallopian tubes are present. These fallopian tubes then open into uterus, and here after the uterus, the structure which is present is known as vagina, which opens to outside with the help of vulva. Okay, and after that we studied about the glands. So this is all about female reproductive system. I hope सबको समझ आ गया होगा. जो भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा. Please like the video, share and subscribe the channel. Thank you.